हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मानकर पीईओ एंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम टी बहुत भल भाव आपण माने बहुत भल अटेंड करिथिबे एवं भल स्कोर भी करिवे। आपण माने जानिथिबे बहुत शीघ्र तार रिजल्ट आसी जिवो एवं ऑफिशियली आंसर की भी विद इन 1 to 2 days रे पळि आसीबो। वर्तमान तो नॉन ऑफिशियली हमर जहाँ भी आंसर की आमे जेमती हमर लास्ट वीडियोज रे हमर ओडिया आउ कंप्यूटर रो आमे आंसर की आमे देथिले वीडियो रे। ओके, तो ऑफिशियली आंसर की तो पळि आसीबो आउ गोटे 2 दिन भितरे एवं आशा करछि आपण माने वर्तमान +2 लेवल रो जे एग्जाम आसीबो आमे कहितले एवं हमर ये रे नोटिफिकेशन रे आमे कहिचे सेटा आपण माने अप्लाई करि सारिबानी। आपण माने जानथिबे सेतरे अप्रोक्सीमेटली 350 पोस्ट अछि। अमीन पोस्ट बाहरी सॉइल कंजर्वेटिव ऑफिसर पोस्ट भी अच्छी। सो आपण माने सेटा अप्लाई करनेबे कारण तार लास्ट डेट होची 24 जुलाई 2023। आज आमे किसी कंप्यूटर नेटवर्किंग क्लास करिबा। देखंतु हमर पीईओ एग्जाम रे नेटवर्किंग रो सिलेबस नथिला बट नेटवर्किंग रो किछ क्वेश्चंस भी आसीथिला एवं आपण माने जानिथिबे आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस आम वीडियोज रो पाखापाखि 27-28 क्वेश्चंस आसीथिला। ओके, वर्तमान ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो जे एग्जाम टी हेबो 10+2 लेवल। ओके, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल रो जे एग्जाम टी हेबो जे अमीन पोस्ट बाहरची सॉइल कंजर्वेटिव ऑफिसर पोस्ट बाहरची सेथिरे मध्ये हमर कंप्यूटर आउ इंटरनेट नेटवर्किंग ए सबु आसीबो क्वेश्चंस। सो आज आमे डिस्कशन करिवा से किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर नेटवर्किंग ऊपर जहा कि लास्ट एग्जाम गुडा करे आसीथिला। ओके, चलो तो स्टार्ट करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ दी कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑप्शन ए नेटवर्क कंप्यूटर विथ केबल, नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल। आंसर इज बोथ ऑफ द एबव। देखो कंप्यूटर नेटवर्क केबल साहाय्य भी आम नेटवर्क आमर कनेक्ट हो पारुछि, विदाउट केबल रे भी आम वाईफाई जमती सेमती आम ता सहित भी आम नेटवर्क भी कनेक्ट करि पारुछे। सो द कंप्यूटर नेटवर्क आंसर हेबो तार with cable and without cable. Next question, FDDI used which type of physical topology? Okay, से कहूची FDDI रो फुल फॉर्म मु लिखि देइची। FDDI रो फुल फॉर्म फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। मन रखिथांतो FDDI रिंग टोपोलॉजी टाको सब बेले फॉलो करथाय। ओके, FDDI used ring topology. Okay, then FTP stands for बहुत थोड़ा ये क्वेश्चन दिया सिची FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर है ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथरनेट सिस्टम यूजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपण माने मन रखिबे क्वेश्चन टी। इथरनेट सिस्टम यूजेस बस टेक्नोलॉजी BUS। ओके, next question, dash is the transmission of data between two or more computers over communication links. आउथरे क्वेश्चन डी रिपीट करूची, dash is the transmission of data between two or more computers over communication links. Answer is option 3 data communication। मन रखितांतो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता से कहूची data communication is the transmission of data। ओके, डाटा ट्रांसमिशन करि थाए बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स। ओके, दुईटा किबा दुई रो अधिक कंप्यूटर को हमरो लिंक हमरो कोन होता है कम्युनिकेशन होता है एवं डाटा ट्रांसमिशन होता है ता कहले डाटा कम्युनिकेशन। देन इन सिंप्लेक्स चैनल फ्लो ऑफ डाटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। मन रखितांतो सिंप्लेक्स रे डाटाटा गोटे वे रे ही जीवो। ओके, in simplex channel flow of data is always in one direction. Answer is option 1. Next question, communication between a computer and a keyboard involves dash transmission। देखो मु इना टिके पूर्व कहली लास्ट क्वेश्चन रे कि in simplex channel flow of data always in one direction माने डाटा गोटे डायरेक्शन जेतले जायथे ताको हम सिंप्लेक्स चैनल कहबा। से नेक्स्ट क्वेश्चन रे पचारुची कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड। देखो कंप्यूटर कीबोर्ड रे आमे डाटा गोटे वे रे देउचे माने डाटाटा केवल जाउची। आ जदी हमर डाटाटा तो रिजल्ट आकार आछी कोन कीबोर्ड आछी कि कीबोर्ड इज वन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस आमे कहिचे जहा साजरे केवल आमे डाटा दबा दैट मींस डाटा ही जीवो से ता साजरे डाटा आमे एंट्री करि परिबा। सो ताको आमे
सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कही थाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन एवं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मीन्स डाटा सब वन वे लेवल रे जीवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड्स मन रखि थांतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डी जो बैंकिंग एग्जाम रे भी आसी छि म इथे मेंशन कर देछि ओके बहुत थोड़ा बैंकिंग एग्जाम रे आसी छि सो ऑप्टिकल फाइबर केबल ओके आंसर इज ऑप्टिकल फाइबर केबल से कोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड्स मन रखि थांतु ऑप्टिकल फाइबर केबल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जीबीपीएस ओके जीबीपीएस देखो गोटे अच्छी बीपीएस बीट्स पर सेकेंड किलो बाइट्स पर सेकेंड ओके जिगाबाइट पर सेकेंड सो सबुठो अधिक डाटा स्पीड है जीबीपीएस आम कहे मनकर गोटे मिनिट रे गोटे जीबी डाटा आमर इनस्टॉल डाटा ट्रांसमिशन हो जाउची दैट मींस बीट्स पर सेकेंड किलोबाइट्स पर सेकेंड ताठू अधिक वाला जीबीपीएस gigabytes per second. So GBPS represents the fastest data transmission speed. Next question. Networking using fiber optic cable is done as networking using fiber optic cable is done as it has high bandwidth, yes. It is thin and light, yes. It is not affected by electromagnetic interference or power surges, etc. All of the above answer. Next question. A device that connects to an important question. भल भाव रे मन रखिथिबा एटा. A device that connects to a network without the use of cable is said to be wireless. देखंतु बिना केबल रे जते बेले हमर नेटवर्क रे डाटा कनेक्ट हेइछु नेटवर्क को कनेक्ट हेबो ताको हमें वायरलेस कहि थाउ. ओके जेमते वाईफाई ओके सो ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू ए नेटवर्क without the use of cable is said to be wireless. Answer is option 5. Next question. A dash is composed of several computers connected together to share resources and data. এটা बहुत important question. Okay. से कहूची a dash is composed of several computers connected together to share resources and data. Answer is network. A network is composed of several computers connected together to share resources and data. Next question. What do we call for the arrangement when two or more computers physically connected by cable to share information or hardware? ताको हमें network कहता हूँ. Okay. What do we call for the arrangement when two or more computers physically connected by cables to share information and hardware? ताको हमें network कहता हूँ. Next question. Which of the following term is associated with नेटवर्क? देखो तो एमएस एक्सेल तो से गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहला माउस ये हला हमर इनपुट डिवाइस वर्ड भी गोटे हमर एमएस ऑफिस रो सॉफ्टवेयर ओके बट कनेक्टिविटी एची जो वाट एची कनेक्टिविटी सेटा हमर एसोसिएटेड विथ नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज is most likely to be shared common resource in a computer network? बहुत tricky question और important question. से कुछ what type of resource is most likely to be shared common resource in a computer network? Answer is printer. Answer is printer. Next question. The first network that has planted the seeds of internet was से कुछ जितने प्रथमे इंटरनेट आसी थिला ता ना कौन कहा जाता ताको कौन कहा जाता ताको आर्पानेट कहा जाता ओके ताको आमे आर्पानेट कहउतले. देखो आर्पानेट रो फुल फॉर्म हमर अब्रिविएशंस क्लास रे हमें कहिथिले आपण माने जदी हमर अब्रिविएशंस क्लास देखिनाती सेटा को आपण माने भी देखिनेबे. सेथरु बहुत गुडे क्वेश्चन भी आसीथिला लास्ट एग्जाम रे हमर पीईओ और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम रे वर्तमान आगामी एग्जाम गुडा करे भी आसीबो. सो सेही क्लास टा को सेही वीडियो को भलो भाव रे बन रखि देबे सेथरु ही सब जहां भी अब्रिविएशंस आसी सेथरु ही आसीबो. So the first network that has planted the seeds of internet was ARPANET. Next question. Which of the following item is not used in local area network or known as LAN? Known as LAN. से कुछ ए भितरु केउ आइटम टी यूज होई न थाए LAN रे. देखंतु लोकल एरिया नेटवर्क रे हमने इंटरफेस कार्ड यूज होता है केबल यूज होता है कंप्यूटर भी यूज होता है बट मॉडेम यूज होई नहीं होई न थाए. सो आंसर इज ऑप्शन 4.
Next question, what do we call a network whose element may be separated by some distance but it usually involves two or more network and dedicated high speed telephone lines? High speed telephone lines भलरे question टी देखि नियंतु. What do we call a network whose elements may be separated by some distance? It usually involves two or more network and dedicated high speed telephone lines. Answer is LAN, local area network. तो कौन कहबा? Local area network. Okay. Next question, the advantages of LAN is sharing peripherals. A question टी बहुत थोड़ा आसी. Okay, the advantage of LAN is sharing peripherals. Okay. Next question, computer connected to a LAN can share. A question टा मन रखिथिबा 20 question टा important. Computer connected to a LAN can share information and share peripheral equipment. Next question, which of the following item is not used in local area network? Modem. Okay, last question रे मुझे सेम जिनिस टा कहतली. इंटरफेस कार्ड, कंप्यूटर केबल ये सब यूज होता है LAN रे, बट मॉडेम टी यूज होई नथा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइंस? WAN रे फुल फॉर्म कोन? वाइड एरिया नेटवर्क. व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइंस? ओके, वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the most important or powerful computer in a typical network? Answer is network server. मन रखी था हमरे क्वेश्चन टी बहुत important question. Network server is the most powerful or important computer in a typical network. Next question, a dash is an agreement between the communication parties on how communication is to proceed. after repeat करूँ. A dash is an agreement. Agreement असला माने answer is protocol. मन रखिता. A protocol is an agreement between the communication parties on how communication is to proceed. Communication किपरि हेबो गोटे agreement जो हेबो सेटा को हमें protocol कहिता हो. Next question, a device operating at the physical layer is called a repeater. Is called a repeater. A device operating at the physical layer is called a repeater. Next question, which of the following is used for modulation and demodulation? देखो modem रो full form पढ़ी आसिला. Modulation, demodulation. Modem रो यदि abbreviation से हम कहते से question भी एठी पचारछि. Which of the following is used for modulation and demodulation? Answer is option 1, modem. What is the function of a modem? अच्छा, modem रा function कौन ना? It मन रखता है बहुत important question. It converts analog signals to digital signals and vice versa. Okay, what is the function of a modem? Modem रा function कौन ना? It converts analog signals to digital signals and vice versa. Next question, geometric arrangement of devices on the network is known as topology. बहुत important question. फास्ट भी एटा भी 27 और 28 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कहूँ जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी. देखो ये क्वेश्चन गुड़ाक बहुत थोड़ा आसी से कह नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल. गोटे केबल रे से कनेक्टेड थिबे ताको हमें बस टोपोलॉजी कहिताओ. एटा मन रखतांदो सेम केबल रे कनेक्टेड थिले ताको हमें बस टोपोलॉजी कहिताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हब इज एसोसिएटेड विथ डैश नेटवर्क? स्टार नेटवर्क. हब इज एसोसिएटेड विथ स्टार नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच टोपोलॉजी every node is connected to two other nodes? देखो ये जो टोपोलॉजी बर्तमान क्वेश्चन गुड़ा को बर्तमान मुझे आनी सब जाक मन रखा निहाती रूप से क्वेश्चन आसो नेटवर्किंग रे. इन व्हिच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स? रिंग टोपोलॉजी. देखो रिंग टा कौन थाए? रिंग रो फिगर टा देखो मुझे कर दूची एठी गोटे एटा सो रिंग भले रहला
ओके देखो प्रति नेटवर्क कनेक्ट होची आउटे नेटवर्क सहित से कहूँ एव्री नोड प्रति नोड एव्री नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स ओके ताको आमे कहि थाउ कोन रिंग टोपोलॉजी आउ जदि 29 क्वेश्चन देखो जो सेम केबल रे हमर नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द बस टोपोलॉजी ओके एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स ता कहै छै रिंग टोपोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन an alternate name for the completely interconnected network topology आउ थरे रिपीट करछि क्वेश्चन टा an alternate name for the completely interconnected network topology is known as mesh topology is known as mesh topology next question p2p is a client or server application architecture important question p2p is a client or server application architecture next question name the fourth layer of OSI model okay OSI रे फुल फॉर्म एठी मु मेंशन कर देछि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से देखो OSI मॉडल रे सातटा लेयर थे 7 लेयर्स ओके से कुछ फोर्थ लेयर रा काम कोन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फुल फॉर्म कोन OSI रो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नेम द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल फोर्थ लेयर हला ट्रांसपोर्ट लेयर कोन ट्रांसपोर्ट लेयर next question in OSI network architecture the routing is performed by network layer मन रखितांदो in OSI रे फुल फॉर्म कोन आउथर कहि दोछि open systems interconnection in OSI network architecture the routing is performed by network layer next question in the following list of devices which device is used in network layer answer is router देखो SSC CGL रे क्वेश्चन आसला 2016 रे मन रखितंदो in the following list of devices which device is used in network layer केउ डिवाइस नेटवर्क लेयर रे यूज होता है आंसर इज राउटर ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन स्विचेस वर्क ऑन व्हिच OSI लेयर डाटा लिंक लेयर ओके से कुछ जो स्विचेस थाए OSI लेयर रो केउ लेयर से काम करे answer is data link layer okay next question in IT networking which of the following device is used in physical layer ए क्वेश्चन हम टिके पूर्व कहितले रिपीटर आंसर इज ऑप्शन 1 रिपीटर से को जे आईटी नेटवर्किंग रे केउ डिवाइस टा फिजिकल लेयर रे काम करे रिपीटर टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सिंग देखो सिंप्लेक्स टिके पूर्व सिंप्लेक्स कहितले गोटे वे रे जीवा हमर डाटा वर्तमान आछि मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स डैश पाथ एंड डैश चैनल्स ओके आंसर इज मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स वन पाथ बट मल्टीपल चैनल्स मन रखि थांदो समस्ते मल्टीपल कहि देबे बट आंसर इज ऑप्शन 2 ओके मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स one path and multiple channels next question what is multiplexer 40 question answer होची question डी होची what is multiplexer okay multiplexer a processor that collects the transmission from several communication media and send them over a single line that operates data higher capacity is known as multiplexer आउथरे क्वेश्चन मु रिपीट करछि a processor that collects the transmission from several communication lines okay and send them over a single line माने बहुत गुडी कम्युनिकेशन मीडिया रो डाटा आनिबो बट सेगुडा को गोटिए पाथ रे डाटा को कोन करिवो ऑपरेट करिवो ओके सेंड डाटा को सेंड करिवो गोटिए पाथ रे ताको कोन कहै मल्टीप्लेक्सर ताको कोन कहै मल्टीप्लेक्सर नेक्स्ट क्वेश्चन to send data or message to and from computers the network software puts the message information in a packet ता कोन कहै जे पैकेट देखो ना क्वेश्चन रिपीट करूची to send the data or message from computers or to computers the network software puts the message information in a packet answer is option 2 next question how many bits are there in the ethernet बहुत important question how many bits are there in the ethernet address answer is 48 bits option 2 मन रखिथिबा से को जे ethernet address रे केते bits रहिता है
48 bits. Okay, next question. Ethernet uses bus topology. मन रखि तांदो एटा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. Ethernet uses bus topology. Next question. In networks, a small message used to pass between one station to another station is known as dash. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भल भाव में मन रखि तांदो. से कहूँ इन नेटवर्क a small message used to pass between one station to another station is known as token. Is known as token. Option 1 is the answer. मन रखि थिबा. ओके देखो एथिला आज किसी नेटवर्किंग क्लासेस. नेक्स्ट क्लास रे आमे इंटरनेट ऊपर आमे किसी क्वेश्चंस आनिबा जहाँकि कमिंग एग्जामिनेशन आमर जो अच्छी कंबाइंड हायर लेवल एग्जाम रो एग्जामिनेशन टी जो अमीन एवं अच्छी आमर सॉइल कंजर्वेटिव ऑफिसर ये सब पोस्ट अप्रोक्सीमेटली 354 पोस्ट अच्छी. ओके से क्वेश्चन गुड़ाक आसो नेटवर्किंग आउ कमिंग वीडियो जो आम करबा इंटरनेट क्लासेस से वीडियो आसो. आशा करुच्ची आपण मानकु ए वीडियोटी बहुत भल लागिवो एवं समस्ते नोट करिनेबे. ए क्वेश्चन गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट. ओके जदि किसी डाउट थाए निहाती कमेंट सेक्शन रे जणेबे एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी. सांग मानकु शेयर करने को भूलिबेनी. थैंक यू.